Evening Prime is brought to you by Misho, TVS Jupiter 125, Zada Se Bhi Zada, Vimal Ilaichi, Oil India Limited, Everyday Spices, Leah Agarbatti, TVS Apache RTR, and Himalaya Purifying Neem Face Wash, Pimple Free, Healthy Skin Ka Expert. Manik Saha sworn in as 11th Chief Minister of Tripura. Confident Saha will continue to take state in path of progress, says Biplab Kumar Deb. BJP United claims Deputy Chief Minister Jishnu Debarma. BJP ally IPFT demands additional cabinet berth in Tripura. IPFT chief justifies removal of Mewar Jamatia as party president. Assam police to approach Interpol on jihadi terror issue, reveals DGP Bhaskar Jyoti Mahanta. Matter taken up with Bangladesh government. Railway and road connectivity between Guwahati and Silchar severely affected due to landslides. Trains stranded in Dima Hasao district. And historic day for Indian badminton. Team India beats 14-time champions Indonesia 3-0 to win maiden Thomas Cup title. Prime Minister Modi congratulates shuttlers. Hello and welcome to Evening Prime. I'm Ronak and we start the bulletin with the big story from Tripura. New Tripura Chief Minister Manik Saha has pledged to carry forward the projects initiated by former Chief Minister Biplab Kumar Deb, even as he thanked the latter for his unflinching support all along. During his first interaction with the media hours after taking oath as the 11th Chief Minister of Tripura, Manik Saha thanked Prime Minister Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP National President JP Nadda, and former Chief Minister Biplab Kumar Deb for bestowing him with the big responsibility. Manik Saha added that his focus would be to continue serving the masses and ensure that law and order is maintained at all costs. আমার যে সবচেয়ে যে বড় কাজ সেটা হচ্ছে মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব যে কাজগুলো ওনার সরকারের যে কাজগুলো এতদিন ধরে উন্নয়নের কাজগুলো করে গেছেন সেই কাজগুলোকে আমি আরো যাতে এগিয়ে যায় সেই কাজগুলো আমি করব এবং পাশাপাশি সমস্ত মানুষের অন্তিম ব্যক্তি আমাদের সবসময় আমরা বলি যে ভারতীয় জনতা পার্টি অন্তিম ব্যক্তির কথা চিন্তা করে সেই অন্তিম ব্যক্তির কাছে যে আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সব প্রকল্প বা যোজনাগুলো আছে সেইগুলো যাতে পৌঁছয় এবং আমাদের যে মাননীয় প্রাক্তন আমি বলবো ফরমার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকার যে সব যোজনা প্রকল্পগুলো করেছে সেইগুলোকে আরো জোরদার ভাবে সেগুলো বাস্তবায়িত করব সেটাই আমি সমস্ত আমাদের ত্রিপুরাবাসীর সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি রাখতে চাই আপনাদের মাধ্যমে। ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি 2016-তে আমি যোগদান করি। তারপর থেকে আমাকে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তো যখন যখন যে দায়িত্ব আমাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আমাদের পার্টি আমাদের উপর দেয় আমরা সেটা চেষ্টা করি সেই চেষ্টা পালন করা। এখন আমাকে বলা হলো ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তার জন্য আমি অবশ্যই আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজিকে, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে, ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি, ফরমার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজিকে প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি প্রকাশ করছি। এখন পর্যন্ত যা যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেইভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত এই স্তর পর্যন্ত আমাকে কিন্তু সেই দায়িত্ব ওনাদের মাধ্যমে এসছে এবং যখনই দায়িত্ব দেওয়া হয় দায়িত্ব হিসাবেই কিন্তু আমি সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করি। চিফ মিনিস্টার হিসাবে অবশ্যই একটা বিশাল দায়িত্ব সেটা তো করবই, কিন্তু তার পাশাপাশি সেই দায়িত্বের চিন্তাই আমাদের করতে হয়
যে কোনো সময় হতে পারে, as early as possible, we'll do it. ক্যাবিনেটে কে কে আসছে তার এই ব্যাপারে কোনো কিছু? এখনো it is yet to be decided. It would be done. When it will be confirmed, we'll let you know. Why should I expose? দ্বিমত আছে যে এত সময় লাগছে ক্যাবিনেট ডিক্লেয়ার। না না, এরকম না। আপনি দেখেছেন আজকে সুন্দরভাবে সবাই ছিল। আমাদের সিস্টেম আছে, আজকে আমি নিলাম, কালকে অন্যরাও নেবে, এবং আমি আপনাদের কথা দিতে পারি যে আমাদের পার্টি অত্যন্ত ডিসিপ্লিন পার্টি, কোনো রকম অসুবিধা বা কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। And earlier in the day, Manik Saha took oath as the 11th Chief Minister of Tripura. Saha was sworn in as the new Chief Minister at the Raj Bhavan by Governor Satyadev Narayan Arya. Cabinet members, I beg your pardon, and state BJP leaders were present at the swearing-in ceremony, which was also attended by the former Chief Minister Biplab Kumar Deb. Saha swearing in as the Chief Minister of Tripura comes after Biplab Kumar Deb tendered his resignation yesterday. The big move came in after Biplab Deb held a meeting with Union Home Minister Amit Shah in New Delhi. Deb returned to Agartala from New Delhi along with BJP observers Bhupendra Yadav and Vinod Taude, following which the party legislature meet was held. Once Saha was made the leader of the Tripura BJP legislative party, both Deb and Saha called on Governor Arya to make things formal. Deb then formally submitted his resignation to the governor. And meanwhile, former Chief Minister Biplab Kumar Deb has expressed confidence that Manik Saha will continue to take the state forward on the path of progress and development. Deb, however, refused to speak much on his new role in the BJP. Listening. राज्यवासी का जो आशा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उसको पूरा करें, वही मैं मानिक शाह से आशा करता हूं, और वो पूरा जो भरोसा है मेरा वो करने में सफल रहेगा। घर आपका बीजेपी का घर यूनाइटेड रहेगा सर? जो काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2018 में त्रिपुरा में शुरू हुई है, उस काम को बहुत अच्छे से आगे लेके जाना है, और त्रिपुरा के आम आदमियों का, अंतिम जनों का जो इच्छा है उसको पूर्ण करना, वही मैं डॉक्टर मानिक शाह से आशा करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है ये काम वो कर पाएंगे। স্যার, আপনি যে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিলেন, আপনার মনে হয় যে এই এক নম্বর হচ্ছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা এবং মডেল ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, আপনার বিশ্বাস যে মানিকবাবু সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন? নিশ্চিত করবে, আর আমি তো এখানেই আছি, তো তার কারণ নিশ্চিত করবে, এটা ভরসা রাখবেন। একটা প্রশ্ন এবং কৌতূহল ভূমিকা দেখা যাবে বিপ্লব কুমার দেবকে, সেটা আমাদের নেতৃত্ব তয় করবে, আর সংগঠনে কাজ করবে গতবাক্য। And we also have reactions from Deputy Chief Minister Jishnu Debarma talking about the alleged discontentment within the BJP leaders over the appointment of Saha as the new Chief Minister. Debarma said that most reports of infighting within the BJP is something that is out of the imagination of the media and rather than being actually true. Look, it is thought about by the center, and all things are considered, and this change has been made. So it is a complete, a decision of the central party leadership, and we, as BJP workers, we accept the leadership decisions. That is the sign of a disciplined party, and there may be a few differences here and there as the party grows. I know you're going to ask the next question is that, but I was telling the other press also that most of the infighting in the BJP is imagination of the press. There are few. There may be some difference of opinion. It has to happen in a democracy. In a democracy, there's always a difference of opinion, and we welcome that difference of opinion. There was no such demand. All of a sudden, why that change? Don't you think that it will go into a trouble? Well, all sides have been thought about by the central leadership when making this decision, I'm sure. We also have reactions from BJP MLA Ram Prasad Paul, who said that differences may exist within a political party, but in the end, everybody stays within the boundary of party discipline. पार्टी के लिए काम करने आया और पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। जनता का सेवा करने के लिए जनता का सेवा करूंगे, वही एक मकसद है, और कुछ नहीं। लेट वेट तो बात नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट कितना लेट हुआ? ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लेट हुआ। एक्चुअली हम लोग पीछे खा रहे थे, आए थे
एक गुस्सा नहीं, ये पार्टी का लिए एक कभी हो जाता है, गुस्सा का नहीं है। ये हमारी पार्टी में सब कुछ है। ये डेमोक्रेसी पार्टी है, ये सब चलता है। लेकिन जो होता है ये डिसिप्लिन के अंदर ही होता है। And meanwhile, soon after the new chief minister was sworn in, BJP ally IPFT sought an additional cabinet berth. Speaking to Northeast Live, IPFT chief NC Debarma said that the party demands an additional berth in the Tripura cabinet. As of now, we have the two cabinet berth for IPFT. But right from the beginning of the coalition government, we are asking for another berth, third berth. Now also in the new format of the chief ministership, we have approved for having the third berth. Not only two, but third also. Three cabinet berth. So let us see how they are managing. Now the total strength is 12. We are having the 11 strength. Now minus chief minister, there are the 10 berth are there. So out of 10 berth, we are asking for the 3. Will those two who are already there in the cabinet, both will remain or there will be some change? In the change circumstances and of the change chief minister, we just put our suggestion to them. Is Mewar Kumar Jamatia's name also been suggested in the suggestion? No, we have not yet decided. After discussion, consultation with the new chief minister and also BJP state president, we shall give our recommendation. And meanwhile, speaking on the sudden change of guard in Tripura, Debarma said that the decision to replace Biplab Kumar Deb as the chief minister is an internal one of the BJP. The IPFT chief added that the new development will not impact the party's coalition with the BJP. Debarma said that working for the development of the people is the IPFT's top priority. Meanwhile, let's listen in to what the new chief minister Manik Saha had to say on the IPFT's additional cabinet berth demand. না সেইভাবে আমার কাছে কোনো প্রস্তাব আসেনি, তো সেটা আমরা অন্যভাবে যখন প্রস্তাব আসবে নিশ্চয়ই আমরা দেখব, সেগুলো বিবেচনা করে আমাদের অন্যান্য নেতৃত্ব যারা আছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছে আমাদের এখানে, আমি বললাম তো আমাদের একটা মানে কম্প্যাক্ট একটা ডিসিশন হয়, এরকম না ইন্ডিভিজুয়াল কারোর ডিসিশন হয়, তো সেইভাবে ডিসিশন যেটা হবে সেটা আপনারা জানবেন। And meanwhile, IPFT chief NC Debarma today made some sensational allegations against fellow party colleague and minister Mewar Kumar Jamatia, who has been removed as the IPFT president. Talking exclusively to Northeast Live, IPFT Supremo NC Debarma alleged that Mewar Kumar Jamatia, who is also a cabinet minister, is involved in anti-party activities and is trying to merge the IPFT with the Tripura Motha. The IPFT chief made it aptly clear that Jamatia will face action for his anti-party activities. If that was not all, NC Debarma also came out all guns blazing against the Pramotha chairman Pradyot Debarma. The IPFT chief alleged that the Royal Scion and Tipra Motha chief Pradyot Debarma is hijacking the IPFT's demand for Tipra land and changing the narrative to Greater Tipra land. According to NC Debarma, the Tipra Motha Supremo's push for Greater Tipra land is nothing but a gimmick. You know the phenomenon of this Produkusur. Produkusur only set up political party in February 2021. And the indigenous people, their aspiration and hope, it was based on the scheduled area as a Tipper land. It was the mindset. On that mindset, he tried to utilize his motive implementation. So, Greater Tipperland, what is Tipperland? What is Greater Tipperland? Have he clarified? Have he publicly announced? Have he issued any white paper? Nothing else. It is a gimmick only. But Tipperland, based on scheduled area, is a granularity. That granularity he is hijacking, try to hijack. That's all. Nothing else. It's time for a short break now. More news and updates to follow on the other side. Stay tuned.
Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Acha? Introducing the new Suzuki Avenus, the sportiest, zippiest ride in town that's loaded with next generation GPS navigation. চিমি ক'ত আছে? যদি মই কলোহেঁতেন আমি মাতিছো তেন্তে ৱেইট কৰালাহেঁতেন নহয়। The new Suzuki Avenus, more zip for trip. आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाचो गाओ मस्ती में आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में বৰুণ হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? ডিছ HD নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম চাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে, ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে। Everyday Spices wishes you a happy Bihu. Everyday Spice. Alpha Independent Leader Paresh Barwa live at 8 p.m. tonight in conversation with Waspi Rusan, a big Northeast Live exclusive. Welcome back, viewers, and on to another big story now. The Assam police is in touch with the Bangladesh government to combat the activities of jihadi elements operating from foreign soil and trying to expand its base in Assam and the Northeast. This has been informed to Northeast Live by none other than Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanta. Talking to our Chief of Bureau Arindam Das, the Assam top cop further said that the Assam police will soon move the Interpol on the jihadi issue. However, DGP Mahanta said that the police have successfully unearthed a huge network of conspirators who had tried to indoctrinate local youth into jihadi mindset. Despite this, the Assam DGP expressed concern over the mode of communication used by the jihadis and their handlers in Bangladesh, terming it as worrisome and sophisticated. DGP Mahanta said that the Ansarul Bangla team, which is an affiliate of the Al-Qaeda Indian subcontinent, is behind the ongoing jihadi activities in Assam. Meanwhile, in a significant statement, DGP Bhaskar Jyoti Mahanta informed that the Ansarul Bangla team is trying to expand its tentacles in Lower Assam and in the Barak Valley and also in Tripura. DGP Mahanta added that Assam police is actively working in close coordination with its counterparts in other states to stop jihadi activities and unearth the financial way of transaction of such elements. Been able to arrest over 20 jihadi elements in the state in the last 2 months. So what is the development right now regarding the investigations? It's quite a large number of elements and their leaders are all from Bangladesh. Some of them have given us their slip, but then we have also taken it up informally with the government of Bangladesh, and through Interpol also we are going to take it up. Yes, we have unearthed a huge network of conspirators who want to indoctrinate local youths into the jihadi mindset. Their mode of communication have been found to be very sophisticated, worrisomely sophisticated. They use very modern app, which is having the signature of AQIS, Al-Qaeda India subcontinent. So they introduce themselves as also Al-Qaeda. Actually, Ansarul Bangla team has declared direct affiliation to Al-Qaeda, and AQIS also has given declaration that now they call themselves Ansarul Islam, because Ansarul Bangla team has been banned in Bangladesh, but out here
they want to spread their tentacles, especially in the lower Assam and some places in Karimganj and beyond, especially in Tripura. Immediately after our catches, Bhopal police has shown tremendous amount of initiative and they have caught some, but then some of them have also fled them. Some people were caught in Tripura, but they were let go. And Assam police, I sent a team immediately. We caught them and got them here, and they have led us to very good recoveries. And we are trying to unearth their financial way of dealing, etc. And I'm sure we have given one particular case to the NIA, and the case is under investigation by the NIA, and I'm sure we have stopped the major conspiracy to bring very dangerous elements into Assam. But what seems to be a case of serious concern is the fact that the jihadis are trying to create an ecosystem in Assam and give shape to their nefarious plans. Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanto said that the handlers are trying to create more sleeper cells in Assam. Who are the handlers? As I said, the handlers are all sitting in Bangladesh and they are proselytizers, and maybe enemy countries have been also promoting their conspiracy. Then, of course, Al Qaeda, India subcontinent, is the main handler. So what were they up to here in Assam? At this moment, they are creating an ecosystem. At this moment, they are creating their sleeper cells, answers, and so that as soon as those mujahids come in, they will join them and create a mayhem. That's the plan. So you have already taken up the matter with the Bangladesh government and you are approaching Interpol? Not yet officially, Bangladesh government, but in unofficial channels, we have taken it up. Thank you. Thank you very much. That was Assam DGP Bhaskar Jyoti Mahanto speaking exclusively to Northeast Live. Reporting from Guwahati, this is Arindam Das for Northeast Live. And another top story at this hour, viewers, an incident of political violence has come to the fore from Tripura's Dhalai district, where a BJP worker was killed in an unprovoked attack. As per inputs, a group of miscreants attacked 3 BJP workers, including Mihir Das, who is the president of BJP's Karamchara Youth Morcha Mandal. However, Mihir Das succumbed to injuries and was declared brought dead by the doctors at the hospital. Meanwhile, 2 other BJP workers identified as Surya Banik and Gopal Banik are still undergoing treatment at the Kulai District Hospital. Meanwhile, Dhalai BJP President and MLA Parimal Debarma met the kin of the deceased and assured all possible help from the government side. Besides, the MLA also directed the police administration to expedite the probe and book all those who are involved in the attack. খুবই দুঃখজনক ঘটনা। গতকালকে রাত 9:30 বা 10টা এরকম একটা সময়ে আমাদের পরমছড়া যুব মোর্চার মন্ডল প্রেসিডেন্ট মিহির দাস বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে আততায়ীরা তাকে অতর্কিত হামলা করে, তার উপর অতর্কিত হামলা করে তাকে মেরেই ফেলা হয়। আর 2 জন খুব সিরিয়াসলি ভাবে আহত হয়ে আমার জেলা হাসপাতালে আছে কুলাই। তো এই মুহূর্তে আমাদের যে একজন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা, খুব সাহসী কার্যকর্তা মিহির দাস, তাকে আমরা হারিয়ে আমরা মর্মাহত। বেশি কিছু বলার নেই, শুধু এটুকুই বলবো যে তার শান্তি, তার আত্মার যেন শান্তি হয়। পাশাপাশি মিহির দাসের পরিবারে, মিহির দাসের একটা ছোট একটা বাচ্চা আছে আর স্ত্রী আছে। পার্টি তাদের সাথে থাকবে, সবসময় থাকবে যতদিন এই বাচ্চার পড়াশোনা থেকে সমস্ত কিছু পার্টি চিন্তা করবে। পার্টি এই বাচ্চা এবং এই স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য। It's time for a short break now. More news and updates to follow on at the other side. Stay tuned. Alpha Independent Leader Paresh Barwa live at 8 p.m. tonight.
In conversation with Waspi Rusan, a big Northeast Live exclusive. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. চাওচোন কোন নতুন খেলুৱৈ আহিছে বুজাই দিম আজি মৰমেৰে বুজাম লাহে লাহে কৰি তেওঁ আমাৰ মাত কথাই কয় এয়াতো আমাৰেই মাত কথা মাত কথা যদি এক তেন্তে হৃদয়ও এক হোৱা উচিত বিমল কক ভাষা কেশৰী বৰুণ হাই মা ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি বোৱাৰী নাহিল যে এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম কি অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা নতুন টিভি লগালা HD নাই লগোৱা কি দেউতা আৰে কিয় কৰি আহিলা জান ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ HD অনুপম পিকচাৰ অনুপম সাউণ্ড নৰ্মেল দামতেই পোৱা HD মাত্ৰ 233 টকা এমাহত ডিছ নহয় ডিছ গাঁও এইটো সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाच गाओ मस्ती में आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में Salman Ella absent perfect attendance নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Welcome back, viewers. You're watching Evening Prime. Before we continue, let's have another look at the headlines. Manik Saha sworn in as the 11th Chief Minister of Tripura. Confident Saha will continue to take state in the path of progress, says Biplab Kumar Deb. BJP United claims Deputy Chief Minister Jishnu Debarma. BJP ally IPFT demands additional cabinet berth in Tripura. IPFT chief justifies removal of Mewar Kumar Jamatia as party president. Assam police to approach Interpol on jihadi terror issue, reveals DGP Bhaskar Jyoti Mahanta. Matter taken up with Bangladesh government. Railway and road connectivity between Guwahati and Silchar severely disrupted due to landslides. Trains stranded in Dima Hasao. And historic day for Indian badminton team. India beats 14-time champions Indonesia 3-0 to win maiden Thomas Cup title. Prime Minister Narendra Modi congratulates India's shuttlers. Welcome back, viewers. You're watching Evening Prime, and on to another big story now. Where there's a will, there is a way. And these words hold true even today. And the man who has stayed firm on this mantra is Arunachal Pradesh's very own Sol Dodum, whose non-violent movement will now ensure that the people of his hometown Sepa in East Kaming district are not deprived of the most basic amenities. On that note, we bring you a special report on Sol Dodum's journey so far. Take a look. History has given us ample examples of how a non-violent movement can bring about decisive change in society. Sometimes there have been instances when those in power were compelled to pay attention to the basic demands of the masses.
be it the Chipko movement of 1973, which was against the cutting down of trees, or the Narmada Bachao Andolan of 1985, which protested against a large number of dams being constructed near the Narmada River. The common factor was the demand for collective well-being. Fast forward to 2022, a man in Arunachal Pradesh took it upon himself to start another movement which would probably go down in history as one of the most significant events which contributed to creating mass awareness about the basic rights of people. The demands were very clear and basic: fresh drinking water supply and restoration of damaged roads in East Cummings Sepa Township. No prizes for guessing, we are talking about Sol Dodum, the activist who became a household name overnight for daring to shake the administration with his demands. Dodum's non-violent movement, which began as a solo initiative, soon transformed into a mass movement. And this caught the government's attention, and steps have now been initiated to resolve the issues raised by Dodum. But how did it all begin? Was it an easy journey for Sol Dodum? Well, it all began on the 15th of April when Sol Dodum set off on a 200-kilometer-long foot march from Sepa with a pledge to stage protest at the tennis court in state capital Itanagar till his demands are met. Amongst other demands was also the transfer of the PHE engineer and Deputy Commissioner of East Cumming District. Team Northeast Live has been keeping track of Sol Dodum's crusade since day one. And speaking to Northeast Live, Sol Dodum said that it was imperative for him to walk all the way till Itanagar, as all his complaints and appeals to the PHE department have been falling on deaf ears. Even an attack on him and lack of support from his family members did not deter the lone campaigner from his mission. सोल दोदम जी, ये जो है शायद से पहली बार किसी ने ऐसा स्टेप लिया है। आपके जो घर वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके एरिया के लोग हैं, वो कैसे सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं आपको? सर एक्चुअली अभी समय में मेरा फैमिली भी हमसे दूर हो गया। मेरा पूरा फैमिली अभी बार बार बोलता है कि जो पीएचई का एक्शन है वो अपना आदमी है, हम लोग का यहाँ में ज़्यादा रिलेटिव चलता है, तो छोड़ दो बोल के सब लोग हमको मना किया। पर हम बोला हम करप्शन के आगे सिलेंडर नहीं मांगेगा और करप्शन के आगे हम नहीं झुकेगा बोल के हम निषेध कर लिया। तो अभी मेरा फैमिली हमको कोई सपोर्ट नहीं किया रहा है, लेकिन हमको बाहर तरफ से बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। और मेरा ये मानना है कि सर करप्शन जो करता है उसका कोई सर रिश्तेदार नहीं होता है और कोई भाई भैया नहीं होता है। Soon enough, there were hundreds who came forward to join the agitation. While some were present on the ground, others showed solidarity on social media. Well, for me, it is just a revolution, I see. I see this as a revolution. And this revolution should go on. It is an alarm for everyone who is suffering day and night. It is a beginning. And people will come forward. And people should come forward from every nook and corner. I will support till my end. If he goes to Delhi, I'm going with him. जी ने अच्छा इशू उतारा है, इसलिए सारा अरुणाचल के लिए वो जेन्युइन इशू है, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि फुट मार्च करके उसको साथ देना चाहिए। As the movement gained momentum, it quickly caught the attention of the government. On the 23rd of April, the state government reached out to activist Sol Dodum. Home Minister Baman Felix invited Dodum to his office, and after a discussion that lasted for hours, assured Sol Dodum that the government would look into the points that have been raised by him, while appealing to him to call off his protest. However, Dodum vowed to continue his protest until his demands are fulfilled. Hours turned into days, but Sol Dodum kept on with his protest. His support also kept growing. On the 12th of May, Dodum took his crusade one notch higher by vowing to march to New Delhi to press the government to fulfill his charter of demands. Finally, on the 13th of May, Sol Dodum's prayers were answered when the state government provided a written assurance to address his charter of demands. Extra Assistant Commissioner of Capital Complex Itanagar, Datum Gadi himself arrived at the IG Park with the written assurance.
The Arunachal Pradesh government, as per the demand of Sol Dodum, agreed to transfer the corruption case in the execution of water treatment plant in Sepa and Nyari Valley Model Village to the Special Investigating Cell for further investigation. The state government also assured Sol Dodum that the case of assault on him during his foot march from Sepa to Itanagar will be transferred to a special investigating team which will be constituted by the state government. And regarding the demand for transfer of DC Sepa, the government assured that the matter will be taken up within 2 to 3 months' time. And while Bharat Sonam, the executive engineer of PHE Sepa, has already been posted out from Sepa. Sol Dodum, on his part, also assured the government that he will not prolong his protest nor bring in any additional demands. However, the activist said that the protest will be renewed if the government fails to act accordingly. थैंक यू नोटिस आपका चैनल हमेशा गरीब लोग के लिए उतारते रहे और हम तहे दिल से आपको तारीफ करना चाहता है ये चैनल को कि आप शुरुआत से अभी तक साथ बना हुआ है। ऐसा है कि हम मैंने ये जितना भी न्यूज़ चैनल है सब आपका तो नहीं, बहुत लोग अरुणाचल में भी बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आपका जो अगर नोटिस बोले तो आपका चैनल ही बहुत साथ दिया है, तो तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपका ओवरऑल फीलिंग क्या रहा? दिल तो बहुत दर्द दिया है कि हम तो पूरा प्लानिंग कर चुका था कि दिल्ली जाना है, पूरा प्लानिंग कर चुका था, लेकिन हमारा अरुणाचल सरकार तो मालूम हो गया कि ये भी बात मानने वाला नहीं था। ऐसा सोचा होगा तो रात को डीसी साहब आए हैं, आने के बाद सुबह 3 बजे तक बैठे हैं, उसके बाद सुबह 8 बजे से कुछ ऑफिसर लोग आते, कुछ लोग बैठा है, तो 8 बजे से ओसी आके बैठा है और उसके बाद एसपी वगैरह बहुत ऑफिसर लोग आया है। तो हम पता नहीं था कि आज इतना जल्दी जीत होगा। हम तो और 3 महीना का प्लानिंग कर रहे थे, हम तो चाहे एग्जैक्ट 1 ईयर 1 साल लाना है तब थोड़ा मजा होगा। तो हम ऐसा लगा कि ये में सेटिस्फाई नहीं है हमको ना, सच बात बता सेटिस्फाई नहीं है हमको, और 3 महीना 12 दिन चाहिए था, तो 3 महीना 12 दिन में हम दिल्ली पहुंचना था। तो लेकिन हम तो ये नहीं सोचा कि इतना जल्दी सक्सेस होगा। तो सरकार को भी हम दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमारा गरीब जनता जो हम लोग का जिसको निःस्वार्थ से सपोर्ट करता है उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा जीत नहीं है, ये आम जनता का जीत है, पब्लिक का और गरीब का। Sol Dodum's journey so far is a testament of how a non-violent movement in the present day can actually bring about change. Dodum's demand for clean drinking water and better roads, which is otherwise a basic necessity of any society, will force the government to look after the basic amenities of the people. News Desk Report, Northeast Live. And in a fresh statement, Sol Dodum has appealed to the Special Investigation Team and Special Investigation Cell must carry out the investigations thoroughly. Addressing the media in Itanagar today, Dodum said that the SIC and SIT must investigate the cases of assault and corruption properly. He said that the movement will be resumed again if he is dissatisfied with the investigation. Sol Dodum said that he will approach the CBI if any loophole is found. हमारा जितना भी अरुणाचल का पब्लिक जनता है उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा हम कुछ नहीं कि हमेशा बोलते हैं कि जितना भी मेरा तो 12 तारीख को जीत हो चुका था, लेकिन अभी जो जीता है इस बार ये जो 15 तारीख को जो जीता है वो हमारा अरुणाचल की जनता है। तो मैं आप सबको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि बताना और बता के रखता हूँ कि कल को ये नहीं होना है कि मैंने नहीं बताया। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि हमारा SIC लोग काम करता है और वहाँ पर बहुत काम जो होता है वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी हम लोग का जितना केस है SIT और SIC लग चुका है, और मैं SIT से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा केस को जांच को अच्छा से कीजिए और जितना भी हो सकेगा ट्राई कीजिए जो सच्चाई को दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में बहुत सा देखा है कि SIT लगता है SIC लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसका नतीजा कुछ नहीं आता है, लास्ट में ऐसा ही गायब हो जाता है। मैं विश्वास करता हूं SIT और सरकार को विश्वास करता हूं
कि वो आगे जैसे प्रॉमिस किया था वो ऐसा ही काम करेगा। अगर एसआईटी और एसआईसी अगर अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप जो हम भी क्लियरली बता रहे हैं, सरकार को हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा। अभी हम लोग सरकार को कोऑपरेट करके हर चीज को पब्लिक बात मान रहा है। अगर एसआईटी और एसआईसी अगर जांच अच्छा से नहीं करता है तो हम लोग सरकार को नेक्स्ट अगर कुछ भी मूवमेंट हो तो सरकार को हम लोग कोऑपरेट नहीं करेगा। और मैं अभी कल हम सिपा जा रहा है, सिपा जाके वहां से हम लिस्ट लेके आएगा जो हमारा पीएचई एक्शन जो अपना होते हुए कितना उम्र का लोग को जो यंग जनरेशन को नौकरी मिलना चाहिए था, यंग जनरेशन को नौकरी मिलना चाहिए था, जो अंडर 30 ईयर्स या तो अंडर 31 32 ईयर्स को मिलना चाहिए था, लेकिन बूढ़ी लोग को वो खुद का फैमिली लोग को नौकरी दिया है जो अभी वो नौकरी का हकदार नहीं है, जो 60-70 एज का दिया उसका लिस्ट को हम लेके आएगा, उसका अपन एसआईटी को देगा। मेरा जीत तब होगा जो ऑफिसर और जो कॉन्ट्रैक्टर पैसा खा के उसको रिटर्न करेगा या तो वो लोग जेल जाएगा, और जो ऑफिसर अपना फैमिली बूढ़ा लोग को जो ओल्ड एज लोग को नौकरी देने वाला वो लोग जेल जाएगा, वो लोग का नौकरी सस्पेंड होगा, तब मेरा जीत होगा, तब पब्लिक का जीत होगा। क्योंकि हम यही सोचते हैं कि कल को कोई भी ऑफिसर ऐसा करप्शन ना करे और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करप्शन ना हो। तो इसलिए मेरा ये सीधी संदेश है कि एसआईटी जो जांच करता है वो भी अपना बहुत अच्छा से करे। अगर एसआईटी अच्छा से नहीं करता है तो हम ये ट्राई करेगा कि हम सीबीआई तक मांग करने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि हम अपना पीछे कभी नहीं आतेगा। हम हमेशा बोला है कि मैं पीछे नहीं आतेगा। It's time for another short break now. More news and updates to follow on the other side. Stay tuned. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. চাওচোন কোন নতুন খেলুৱৈ আহিছে। বুজাই দিম আজি, মৰমেৰে বুজাম, লাহে লাহে কৰি। তেওঁ আমাৰ মাত কথাই কয়। এয়াতো আমাৰেই মাত কথা। মাত কথা যদি এক, তেন্তে হৃদয়ো এক হোৱা উচিত। বিমল কক ভাষা কেশৰী। আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে, ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে। এভৰিডে স্পাইচেছ উইশেছ ইউ এ হেপী বিহু। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। বৰুণ, হাই মা। ঘৰত বাৰু কাজিয়া কৰি আহিছ নেকি? বোৱাৰী নাহিল যে? এতিয়া মই গোটেই মাহটো ইয়াতেই থাকিম। কি? অৱশ্যে ক্ৰিকেটো এমাহ ধৰিয়ে চলাৰ কথা। নতুন টিভি লগালা? দিছ এইচডি নাই লগোৱা? কি দেউতা? আৰে কিয় কৰি আহিলা? জান, ফুলটো সকলোৱে নকৰে জানো। ক্ৰিকেটৰ আচল পাৰ্টনাৰ হ'ল কেৱল ডিছ এইচডি, অনুপম পিকচাৰ, অনুপম চাউণ্ড। নৰ্মেল দামতেই পোৱা এইচডি মাত্ৰ 233 টকা এমাহত। ডিছ নহয়, ডিছ গাঁও এইটো। आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में, बड़े छोटे साथ आओ ऐश करो नाच गाओ मस्ती में। आओ यहाँ बार बार खेलो झूमो कूदो यहाँ मस्ती में। Alpha Independent Leader Paresh Barwa live at 8 p.m. tonight in conversation with Waspi Rusan, a big Northeast Live exclusive. Welcome back, viewers, and on to another big story now. Landslides triggered by heavy downpour has severely affected normal life in several parts of Assam. Road communication and railway routes particularly have been hard hit. For instance, 2 passenger trains have been stuck since yesterday owing to landslides and inclement weather conditions.
While the Guwahati Silchar Express is stranded at the new Haflong railway station, the Silchar Express has remained stuck at Ditokchera due to waterlogging along the railway tracks. Scores of passengers have taken shelter at the new Haflong railway station. Similarly, at Harangajao, people are experiencing extreme difficulty with power supply cut off for over a week now. Meanwhile, the Indian Air Force evacuated civilians who were stranded in a train at Ditokchera in the Mahasau district. उनमें बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। तो मतलब आप 26 लोकेशन में ब्रीचेस हुए हैं जहाँ पे पानी भर चुका है या फिर पटरी के नीचे से मिट्टी बह के निकल गई। वागरेन दिशा, फिडिंग, न्यू हाफलॉन्ग, जातिंगा लामपुर, न्यू हरंगाजाओ, डिटोकछेरा, बंदरखाल, इन सब स्टेशनों पे, इन सब सेक्शनों पे डैमेजेस हुए हैं। हमें जैसे ही पता चला कि हैवी रेनफॉल का वार्निंग है, हमने सारी ट्रेन्स को कंट्रोल कर लिया था। हालांकि 2 ट्रेनें हैं, गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस और सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस, जो एक डिटोकछेरा और न्यू हाफलॉन्ग में फंस गई हैं। जो पैसेंजर्स न्यू हाफलॉन्ग में फंसे हैं, उनके लिए हमने माईबांग से गुवाहाटी तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन की सर्विस अनाउंस की है। माईबांग तक इन पैसेंजरों को न्यू हाफलॉन्ग से बसेस में ले जाया जा रहा है, जिसके लिए चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने 4 बसेस अरेंज किए हैं। और जबकि डिटोकछेरा से में जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, उनके लिए दामछरा नाम का एक स्टेशन है, वहां से ट्रेन चलाया है हमने बदरपुर तक का। डिटोकछेरा से दामछरा तक का। And on to the big sports news now, viewers. Lakshya Sen, double pairs of Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty and Kidambi Srikanth scripted history as the Indian men's badminton team beat Indonesia 3-0 to win their first ever Thomas Cup trophy. Kidambi Srikanth beat Jonathan Christie 21-15, 23-21 in the second singles to seal India's maiden victory in the history of the competition. Earlier, Lakshya was brilliant at the start as the youngster recorded a come-from-behind victory over world number 5 Anthony Sinisuka Ginting. Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty then showed their skill set and experience to outsmart Mohammad Ahsan and Kevin Sanjaya Suka Muljo. It was Kidambi Srikanth who then sealed victory for the first ever Thomas Cup gold for India by defeating Asian Games gold medalist Jonathan Christie 21-15, 23-21. India thus became the 6th nation to be crowned Thomas Cup champions. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi congratulated the Indian badminton team for the big victory. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma and the President of the Badminton Association of India also extended their heartiest congratulations. We have reactions coming in from the Badminton Association of India President as well as the Assam Chief Minister. Let's listen in. ভাৰতীয় বেডমিণ্টনৰ বাবে এটা অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু স্মৰণীয় দিন। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষই ফাইনেল খেলিছে আৰু তাৰ লগে লগে থমাছ কাপ লাভ কৰিছে। থমাছ কাপ হ'ল বিশ্ব বেডমিণ্টনৰ টিম চেম্পিয়নশ্বিপৰ আটাইতকৈ যিখন সৰ্বোচ্চ খেল, সেইখনকেই থমাছ কাপ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতীয় বেডমিণ্টন সংস্থাৰ সভাপতি হিচাপে মই অত্যন্ত আজি আনন্দিত যে এনেকুৱা এটা মাইলৰ খুঁটা আজি ভাৰতীয় বেডমিণ্টনে স্পৰ্শ কৰিব পাৰিলে। মই খেলুৱৈ, কোচ আৰু ছাপৰ্টিং ষ্টাফ সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। On to another big story now. The videographic survey into the Gyanvapi Mosque complex adjacent to the Kashi Vishwanath temple in Varanasi of Uttar Pradesh has ended today. The videographic survey is being conducted by a team appointed by a Varanasi civil court. It is learned that the team is working for documentation of its collected evidence and will soon submit the same before the court. It may be mentioned here that a Varanasi civil court has directed a survey to inspect, conduct videography and collect evidence regarding the existence of Hindu deities inside the Gyanvapi Mosque located next to the Kashi Vishwanath temple. Last week, the survey was stalled amidst objections by the Mosque Committee, which claimed that the Advocate Commissioner appointed by the court did not have the mandate to film inside the premises.
The committee accused him of bias and filed a plea for his replacement. And earlier today, as the survey entered its second day, the deployment of security forces has been made on an increased scale as compared to the deployment on Saturday. While the survey was on inside the complex, there were elaborate provisions in place to make sure that the devotees visiting the place did not face any problems due to the survey. 40 साल हो गया दर्शन करते। वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर आज से 30-35 साल पहले का है, ऐसा थोड़ी है कि आज का है। वो तो रहा है, अगर वो सर्वे होगा तो उसमें सारा फोटो वगैरह मिलेगा आपको। श्रृंगार गौरी वही है ही है। ये उनकी जबरदस्ती है, ये राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो सीधे जहाँ मंदिर है वहाँ मस्जिद का कुछ प्रश्न नहीं उठता। श्रृंगार गौरी वही थी, हम लोग तो आज से 35-40 साल से देख रहे हैं। And with that, we've come to the end of our news bulletin. Stay tuned to Northeast Live for more news and updates. Thank you for watching. Alpha Independent Leader Paresh Barwa live at 8 p.m. tonight